Zakir, Neeti, thank you so much and welcome to OTT Play. And thank you so much for doing this and taking the time. So, before we get to the real deal, so what has this process been like? Season three promotions and uh, spreading the word about the show. कैसा लग रहा है? क्या चल रहा है? Can you आई थिंक tell अच्छा me लग about रहा the है। show? पहली बात है कि बहुत साल लगा इसको, क्योंकि हमने लॉकडाउन के बीच में भी शूट करने की कोशिश करी, फिर वेव्स आती रही, हम रुकते रहे, उस चक्कर में बहुत सारे रद्दोबदल करने पड़े हमको। तो जब इतनी मेहनत और इतने दिन लगा के आप कुछ करते हैं तो आई डोंट थिंक सो उसमें कोई हर्ज है कि हम उसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। वही हम आज करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नीति मिलकर। क्यों नीति? Right, Actually, yeah, it's been such a long time coming. We are just grateful that it's done, it's right, out, and we really wanted to get the kind of love that we've given it. So, right. But, my first question is going to be this: as judges, though you're sitting, as judges on the show, but technically you're letting more comedians inside your territory as competition each year, है ना? कि हर साल नए comedians आते हैं और potentially, some of them they grow, exponentially and become superstars. तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में insecurity रहता ही होगा. What is it like to be a judge and at the same time, because considering the Indian comic landscape, how young it is, what is it like to judge and at the same time, look at your competition firsthand? आई थिंक ये उतना वैलिड नहीं है सवाल जेन्युइनली। Okay. एज ए जर्नलिस्ट, अगर आप कहीं पे किसी इंस्टीट्यूट में, जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट में गेस्ट लेक्चर देने जाते हैं तो आप ऐसे नहीं देखते हो कि ये वो लोग हैं जो कल को मेरी नौकरी खा लेंगे। आप उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो। वैसे ही हम लोग भी अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करते हैं। उसके स्पेस बहुत बड़ा है यार, बहुत सारा काम है। हर इंडिविजुअल की अपनी जगह है। ऐसे तो आप किस किस को जहर दे के मारोगे? मतलब कॉमिक्सतान कोई अकेला प्लेटफॉर्म तो है नहीं जहाँ पे कॉमेडियंस तैयार हो रहे हैं, अपना खुद का भी करते हैं, वहां भी तैयार होते हैं, कॉमिक्सतान पे बच्चे तैयार होते हैं, बहुत अच्छा वार्म सेटिंग रहता है। तो हम अपने तरीके से उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं। जब मैं शुरू कर रहा था तब टंडन साहब, नीति, ये देखिए पोस्टर लगा है पीछे, ये मेरा पहला पोस्टर था जो नीति ने मुझे शो दिया था, ठीक है। तो उस वक्त जब ये अगर उस तरह से सोचती तो शायद मुझे ये मौका नहीं मिलता, और ऐसे बहुत सारे मौके मेरे हाथ से छूटते। पर ये जरूरी होता है, बहुत छोटी कम्युनिटी है तो हैंड होल्डिंग की जरूरत बहुत होती है, और एक किसी का भी नाम हो जाता है अच्छा तो सबका काम चलता है उससे। तो मेरे ख्याल से हम चाहते हैं कि और लोगों का नाम हो, और ज्यादा नाम हो, तो हम सबका उसके स्पिल ओवर में काम चले। तो मेरे ख्याल, मेरा तो ये मानना है, बाकी नीति बताएंगी। yeah, actually, the more talent you induct, the bigger the industry grows, and the bigger the pie for all of us, honestly. जो जब गंदे गंदे comedians निकलते हैं, तब that is when the industry will shrink. So we keep looking for fresher talent and hoping for more original voices, funnier comedians. I don't think insecurity कभी दिमाग में आती है। हमें लगता है कि जाओ तुम भी मेहनत करो और हमारे लिए मार्केट ग्रो करो। क्योंकि नए ऑडियंस पे तक जब जाएगा, कोई भी 100, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कमेडियन जिसकी वॉइस बहुत यूनिक है और वो अपने साथ 200 लोग लेके आता है, उसमें से अगर 50 भी रेगुलर कॉमेडी फॉलोअर बनते हैं तो हमारा 50 का फायदा हुआ है भाई। I mean, if you look at it this way, like Zakir, Amit, these guys went abroad, okay, and they took Indian comedy abroad and opened out a whole new market for us. तब हमें ये थोड़ा लगा था ओहो हमारा कंपटीशन जा रहा है, हमें लग रहा था वाओ हमारे पायनियर्स जा रहे हैं, हमारे लिए मार्केट। Maybe not in a negative way, but at the same time, कि मतलब ये community जैसे ही बढ़ेगी, and obviously, competition probably is the wrong word, but then I'm saying that at some time you would have to. You would be no, but as compared to what? As compared to industry grow ना करे, लोग आगे ना बढ़े, हम खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। There is a space we need. मतलब I understand. This is not the first time we've been asked this question, but this is the real answer. कि सब इंडस्ट्री में तो ग्रो करते हैं लोग, सब इंडस्ट्री में हर बार आप अपने कॉम्पिटिशंस को इंडक्ट कर रहे होते हैं। एक कोडर जब किसी नए लड़के को बुलाता है, आप ये तो आपका एक्सपीरियंस है, म्यूजिशियंस सब लोग। हाँ, तो क्या वो सिखा रहे हैं क्या? Since you talk about competition, if you're on a lineup show, for example, and the comedian before you has really destroyed, like बहुत हंसाया लोगों को, that makes you up your game automatically. You don't go up like this, you go up like that, saying I have to do better than this, and you will do better, just because you went with that. आप क्या comedians को छुपा थोड़ी दोगे कि नहीं इनका ना चले, मतलब वो so much so we want, but it can't. जहर का ऑप्शन वैसे अच्छा है। Yeah, हाँ, कितने लोगों दोगे यार? हर बार और बेहतर और शार्पर लड़के आएंगे, तो only thing you can do is, so I am very lazy person, so that's why I've chosen a lazier process, which is to work on myself. Okay, perfect. क्योंकि जहर देना बहुत मुश्किल है बहुत सारे लोगों को।
जाकिर भाई, आप नेक्स्ट सवाल आपके लिए। तो जी भाई। when you arrived on the scene, a lot of people said that you arrived with a sense of style. मतलब you were prepared for the stage, right? I mean, कई तो तन्मय भट्ट ने भी कहीं कहा था कि you figured out what your style is, right? जी। What does style mean to you for a comedian on stage or anywhere? What does the term style mean for a comedian? I think the term style for the comedian means is that it's a unique voice you have. आपका बोलने का लहजा, आपका बात करने का तरीका, आपकी सेंसिबिलिटी का जोक जिसको सारे लोग पसंद करें, वो स्टाइल होता है। कोई वन लाइनर होता है, कोई एनेक्डोट सुनाता है, मैं कहानियां सुनाता हूँ, स्टोरी टेल। तो वो सब एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर डिफाइन करता है इन कॉमेडी स्पेस। मेरा पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लगा शुरू में मैं वही करना चाहता था जो सब लोग कर रहे थे, और मेरी भी पूरी कोशिश थी, पर मुझे रिजेक्शन आया ऑडियंस से कि उन्होंने लगा कि तुम्हारे मुंह पे नहीं जम रहा है ये। ऐसा नहीं कि मैं चाहता नहीं था। सी आई स्टार्टेड डूइंग कॉमेडी like everybody else we all wanted to be cool, right? So that's why we do extra activities in life. We all want to be cool. So I also wanted to be cool. I wanted to do cool comedy. पर मेरी ऑडियंस से मुझे बड़ा रिजेक्शन आया कि नहीं, तुम्हारे मुंह पे नहीं जम रहा है ये सब। तो जो स्टाइल मैंने उस वक्त फिगर आउट किया कि आई वांटेड टू मेक एवरी ऑडिटोरियम स्टेडियम इनटू अ ड्राइंग रूम कन्वर्सेशन, राइट, एंड आई वर्क टुवर्ड्स इट। राइट। आपका ना, जैसे हमने कहा कि लहजा की बात की आपने, तो you're very मतलब very friendly and very relatable and sort of high energy होता है जनरली आपका। But how to say on the other side, stage के बाहर जब when your life has brought you down, how do you still manage to pick it up on stage? Is that part of the job? आपको वो मतलब जाते जाते सीखना ही पड़ेगा, कैसा है वो? मेरे ख्याल से मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि द पर्सन ऑन स्टेज एंड द पर्सन ऑफलाइन इज इन टैंडम, in mix. Right. It's when I'm on stage is the happiest version of me, and I'm generally very happy when I'm on stage. मतलब I enjoy, इसीलिए मैं शो लिखता नहीं हूँ। तो उस वक्त जो भी जैसी एक अल्फाज है, बड़ा खूबसूरत आमद कहते हैं उसको, राइट, कि वो खुदा की तरफ से आता है। तो मैं उस आमद में बड़ा यकीन रखता हूँ कि जब मैं लिख के नहीं जाता हूँ, तो जब जैसा जैसा बहता है ऊपर से आता है, जैसे जबान में आता है वैसी तरबियत के साथ आप बोलते हो, और उसी का मैजिक होता है मेरे ख्याल से, तभी इतना सुंदर भी लगता है। Okay, beautiful. Neeti, I wanted to ask you this. Talking about style again, you have your own unique voice, as in the sense that you're a comedian, but at the same time you touch upon slightly, socially relevant, or you speak of patriarchy and stuff like that. But obviously in the garb of humor, right? So as a judge, what is it that you're looking for in a comedian? Are you looking to get surprised, or are you looking for something that strikes a chord with you? Well, I mean, I'm also human, so if it strikes a chord, then yes, extra points for that for sure. But I'm also like as a comedian, I'm a writer. Like my jokes are written, they're strong, and then comes the performance when I perform. So inevitably, I would end up grading them more for if the joke was well written or well thought out or came completely off center. I didn't see the punchline coming. So that used to excite me more than anything else. And of course, if they manage to deliver a message with it, then bonus points. But that was my thought process. As long as the joke is funny, makes you laugh, it's great. But how well crafted it is what excites me. Right. And, do you draw a line saying that beyond this, I can't take this, it's offensive for me? Or you're like, okay, you know what? As long as there is a technical merit to it, I accept it as a joke. Or is there a spectrum through which you sort of gauge jokes? As far as I know, because I'm a comic myself, I know that it doesn't benefit us to offend anyone because we want to sell our tickets. So why on earth would we want to offend people so that they never come back? So I don't think largely offense is intended, like not on purpose at least. Right. But would you say that it's a relative term? It's a subjective term rather? It's extremely subjective because where the line is, my line could be here, yours could be there. It's very hard to kind of judge on the basis of parameters because everyone will only have their personal ones to measure by. Right. Okay. Yeah. Perfect. Zakir bhai, similar सवाल आपके लिए कि what do you look for in the contestant as a judge? What is that? Is there an X factor that you're looking for, or said a unique voice? कि उनका अपना एक अलग अंदाज हो कि what is it, or like writing की तरफ से हो, like what is it that you look for?
I think हर शख्स की whenever anybody is on stage, they have their own flaws and their advantages, and I'm the only thing which delights me as a judge is when I see them play their advantages and hide their flaws, and that is something which is very beautiful, and it adores me, it charms me like anything. So if somebody can pull that off, I love them. I think that's what हम सब अपनी अपनी inferiority complexes से बने हुए हैं, तो जब कोई उनसे जीतता है और उनको छुपा पाता है तो मैं बड़ा फैन हो जाता हूँ उस शख्स का. तो मेरे लिए तो वही है सबसे बड़ा वैल्यू.